Ladies and gentlemen, imagine sending your child thousands of miles away to another country, a country that has been fighting a war for over 2 years. Each day in a circumstance such as this would be a challenge. But what would be the reassuring thing to do? And especially when this is not a fight of your own. 32-year-old Binal Babu's family stands completely shattered, heartbroken. Binal Babu lost his life on the battlefield in Ukraine after falling into the hands of a Russian mercenary group. He leaves behind a family that is desperately seeking help and an infant child, while the family is gripped with this unbearable loss. We ask, why was Binal Babu not given the help he appealed for? Why did this go completely unheard? Will the government of India really respond? What we have found out is that despite the multiple petitions that were made by the family members, there was scant response. On This Is Exclusive, we bring you the latest response from the family members of Binal Babu. Ladies and gentlemen, a heartbroken father's appeal. Watch how he says for 8 months, the family was running around sending petitions, letters to the government of India as well as the state government, only to be met with complete disappointment. This is for the first time Binal Babu has spoken. Binal Babu and Magan Binal Rashid Kuimatalatil Chairman Marhamad in the government, Kerala government of the New നേരിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ പിമാരാണെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്തു 8 മാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയായിരുന്നു. മരണം ഓർത്തായിരുന്നു. ഞാൻ ബോഡി എത്രയും വേഗം സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ടാവണമെന്ന്. But in fact, the mother's been completely left distraught. A lady grieving the tragic death of her son, saying that she is ready to fall at anybody's feet if that means she gets to see him one last time before he is put to rest. Binal's wife is not only mourning the loss of her husband, but also stands shattered at the thought that their infant son will never see his father. She desperately says, please bring him back. Listen. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായോ? 6 മാസമായി ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞു നീങ്ങി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായോ? എന്റെ കൂട്ടത്തിനൊന്നും കാണാനെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയോ? ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 6 മാസമാവാൻ പോണു. ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും അപേക്ഷകളും ആര് പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോവാ, അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതെങ്കിലും ചെയ്തതായോ? അങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയോ? എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബോഡി വേഗം എത്തിക്ക്. എന്റെ മോനെ അവന്റെ അപ്പനെ അങ്ങനെയെങ്കിലും നേരിട്ടത് കണ്ടോട്ടെ. Those desperate pleas that have been made by the family members, we'll play that out once again so that those at the Ministry of External Affairs are really watching what's really happening. In a short while from now, ladies and gentlemen, we're going to put out a clincher evidence. But before that, we take you through the story of 32-year-old
and a native of Kerala's Thrissur district who died in a drone attack during the Russia-Ukraine war. Now, his relative Jen TK, also from Kerala, sustained severe injuries in the war zone. Now, before the attack, Binil had made desperate appeal for help to the Indian authorities. The videos that have been accessed by Republic TV shows how desperate pleas by Binil Babu went completely unheard. And this video was sent by Binil Babu to his relatives on 16th of December. Now, in a short while from now, I'll tell you what really happened between 16th of December and 23rd of December. This after the video was released, given to the family members, one would have expected that there would have been some response, that the Ministry of External Affairs would have responded with alacrity. But this is what has happened. First, take a look at this full story, and then we take you through how the family is now accusing the Ministry of External Affairs of complete inaction. This is Binil's story, a 32-year-old from Kerala who was forcibly sent to a war zone in which his life was claimed in a drone attack during the Russia-Ukraine war. Watch the heart-wrenching video message from September 2024 in which Binil and Jain appealed to their families, urging to be saved from the situation. എൻ്റെ പേര് ജെയിനാണ്, വീട് മീനാലൂർ കുറാഞ്ചേരിയിലാണ്. എൻ്റെ പേര് ബിനിലാണ്, വീട് കുട്ടല്ലൂരാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ റഷ്യയിൽ ആർമിയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സന്ദീപിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 3 ആഴ്ച മുമ്പാണ് സന്ദീപ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എംബസിയിൽ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചു പോരാനുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇപ്പം മാറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നു എംബസി ഇടപെട്ടിട്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ബാക്കിലോട്ട് പോയി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തിനാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. A desperate Binil crying for help has time and again reached out and asked for assistance. This is that very video clip which proves that Binil and Jain did reach out to the Indian embassy. Despite countless desperate pleas, Binil and Jain had no luck as the government continually turned a deaf ear. എൻ്റെ പേര് ജെയിൻ, വീട് തൃശ്ശൂരാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് റഷ്യ-ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സോണിലാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ബിനിലേട്ടനുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി ഇവിടേക്ക് ഫുഡ്, വാട്ടർ, വെള്ളം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് ചെല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മാഗസീനും ഗ്രനേഡും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 8 പേരോട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ജോലിയായിട്ട്. അതിൽ 4 പേരിന് അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് എംബസിയിൽ രാംകുമാർ സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ 3 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കമാൻഡറുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ കമാൻഡർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇതുവരെ ക്യാൻസലാക്കിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ അവർക്ക് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം, അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് സഹായിക്കണമായിരുന്നു. Speaking to Republic, Binil's family voiced their cry for help to the Indian government. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ച് സംസാരിക്കാനേ അവന് പറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബിന്നിൽ അവിടെ ജയം പറഞ്ഞു ബിന്നിൽ മരിച്ചു എന്ന് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് MP-ക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സുരേഷ് ഗോപി സാറിനും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. മുമ്പുള്ള 3 ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തായിരുന്നു. മന്ത്രിമാർക്കും MP-ക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആരും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ചെയ്തെങ്കിൽ എന്റെ മക്കള് വരായിരുന്നു, ബിന്നിലിനെ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ബോഡി ജീൻ കണ്ടായിരുന്നു, ബിന്നിന്റെ ബോഡി കണ്ടു.
Multiple conversations with Binil's family show what the family is going through at the moment, and it indeed cannot be put to words. Meanwhile, the Ministry of External Affairs has released an official statement after being on the back foot because of its inaction. The MEA said that they are working with Russia to ensure the safe return of the mortal remains. The question, however, remains: who failed Binil and Jain? After Binil's video from the frontline, which came to light on 16th of December, the family reached out to the embassy in Moscow. Today, the family has released evidence of how they were left in a complete lurch. Between 16th of December and 23rd of December, the family members sent multiple messages to the embassy in Moscow. In response, the embassy had no solutions but a feeble response. Now let's take you through the evidence that has been released by the family members. In fact, these are messages on the very day they received the video from Binil, where he was making the desperate plea, asking the government to help. This message was actually sent to the embassy in Moscow by the family members of Binil. And the response that came in is this: we are taking all possible action. Soon they will be. The next message that was sent was just about a few days ago, where you have the government basically responding, saying, ma'am, we are doing all possible ways to get them out quickly. Between 16th of December and 23rd of December, there were messages that were sent between the family members of Binil and the Ministry of External Affairs. In fact, this was with the embassy in Moscow, which these are the multiple messages that were basically sent out. Now, the family claims that they have only got 2 responses from them. They were templated responses of possible help really coming in. Joining us on this broadcast is Libin. He's Binil's brother. Our deepest condolences, Libin. सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप इस वक्त कहाँ हैं? और दूसरी बात, आपके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप लोग को कोई मदद नहीं कर रही थी। हाँ, मैं अभी यूके में है। मैं मेरा फैमिली के साथ बात किया। उन्होंने बहुत मन से मेरे भाई को वापस लेने के लिए कोशिश किया। लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए बहुत तकलीफ होता है ये पूरी बात करने के लिए कि किस तरह से आप लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, पर ये बताइए कि मॉस्को एम्बेसी में जब आपने पहली बार ये बताया कि आपके भाई ने 16 दिसंबर को पहला एक वीडियो भेजा जहां पे वो अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लेके आए, उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स आया? एम्बेसी का क्या कहना था कि आखिरकार किस तरह से वो मदद कर पाएंगे आपको? वो बोला उसका साइड से वो हम करते हैं, मगर रशिया से वो साइड से कुछ नहीं मिला, न्यूज़ नहीं मिला। हमारे उधर से सब करते हैं, उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम बताएगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोल के रखे हमारे को। हम आप लोग आपने कितनी बार कोशिश की? आपने कितनी बार कोशिश की कि मॉस्को से जवाब आए? क्या आपने रशियन अथॉरिटीज से भी बात करने की कोशिश की? क्योंकि कुछ जो मैसेजेस आप लोग ने रिलीज किया उसमें आप लोग ये भी कह रहे हैं कि बिनिल खुद कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, जिसके कारण रशियन उनको छोड़ने के लिए मना कर रहे थे। क्या आप लोग ने कोई कोशिश की कि रशियन से भी बात करें? नहीं, ऐसा हमको बात नहीं कर सकता। हम रशियन हमारे एम्बेसी से बात किया था, वो हमको कुछ आइडिया नहीं था उसके किसी के साथ बात करने के लिए, किसी को फोन करने का कुछ आइडिया नहीं था। हम सिर्फ इंडियन एम्बेसी और हमारे उधर का एमपी पॉलिटिशियंस को सब बात किया था। लेकिन ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके भाई का देहांत हो गया, और क्या उन्होंने ये कहा कि आखिरी कुछ दिनों में भी उन्होंने काफी कोशिश की अथॉरिटी से बात करने के लिए ताकि उन्हें रिहा कर दे? क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि उनके साथ जो कुछ लोग गए थे वो वहां से निकलकर भारत वापस आ गए।
हाँ वो ए, कुछ दिन पहले एक संदीप नाम के एक आदमी था, उसका वो मर गया। उसके साथ कोई केरला वाला लोग था, वो वापस आ गया, मगर मेरा भाई और जैन को वो नहीं छोड़ दिया। वो फ्रंट लाइन में काम किया था, इसलिए वो बोला वो फ्रंट लाइन में जो आदमी लोग है इसको छोड़ेगा तो वापस उधर से प्लेस के लिए कोई नहीं मिलते, इसीलिए उसका कमांडर उसको उन लोगों को नहीं छोड़ा, ऐसा न्यूज़ मिला था। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि इस वक्त आप लोग को क्या कहा गया है कि क्या उनका शव वापस लेकर आएंगे? कुछ जल्द ही बात होगी। आखिरी बार आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आप लोग कब बात किए? मेरे पिताजी ने बात किया, वो बोला उसका वो तुरंत करेगा बोला, मगर वो पहले बार मेरा दोस्त संदीप का बॉडी आने के लिए 45 डेज लगा। पता नहीं मेरे भाई को भी लेने के लिए कितना दिन लगेगा। वो लोग बोलते कोशिश करेगा जल्दी लेके आने के लिए। आप लोग थोड़ा मदद करने का लेकिन रास्ते। आप ये कह रहे कि आपको इस वक्त कोई जानकारी नहीं है कि आपके भाई के शव को नहीं, वापस कब लेकर आएंगे? वो बोला जल्दी करेगा बोला, ऐसा बोलते, कब करेगा कितना दिन लगेगा ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। आपको कोई टाइम डेट कुछ भी नहीं बताया गया? क्या आप आज नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनके मंत्री को क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपकी मम्मी जो इससे पहले हमसे बात उन्होंने की थी, उन्होंने ये कहा कि एमपी से बात किया गया है, एमएलए से बात किया गया है, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। आपके पूरे परिवार को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे पूरे सरकार को? वो सही है। हम मेरे पिताजी इसके बारे में एमपी लोग को देखने के लिए गया, बाद में उसको काम के लिए नहीं जा सकता, इसलिए उसको काम से भी निकाला। अभी मेरा पिताजी को काम नहीं है, वो इसका मेरे भाई का ये पेपर वर्क का पीछे जाने के टाइम इसीलिए उसका काम गया। और भी मेरे पिताजी बहुत कोशिश किया, सब जगह के ट्रेवेंटर में जाते हैं, तो जो लोग बोलते हैं उधर जाओ इधर जाओ, ऐसा मेरे पिताजी जो जो बोलते हैं वो उधर सब जा गया, मगर कुछ वो बोलते हैं हम करेंगे, वो क्या करते हैं तो पता नहीं। वो बोलते हैं हम कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं मिला। उन लोगों ने थोड़ा ये करेगा तो मेरे भाई अभी जिंदा से आ सकता था। अभी वो उसका बॉडी भी हमको थोड़ा जल्दी, इतना दिन वेट नहीं कर रहा हमको, इतना दिन वेट करके मेरे माँ भी खाना भी नहीं खाते, ये सोच के उधर ही पता नहीं इसका हालत क्या होएगा। इसे एक रिक्वेस्ट है मेरा भाई को थोड़ा जल्दी वापस आने के लिए कुछ करो। वो इंडिया रशिया इतना अच्छा रिलेशन है ना, तो वो मेरा आखिरी बार मेरे भाई को जल्दी देखना चाहते हूँ। उसका जिंदा जिंदा से देखने के लिए हम बहुत कोशिश किया, ये लोग कुछ नहीं किया, मगर उसका डेड बॉडी भी हमको थोड़ा जल्दी मिलने के लिए कुछ करने के लिए मैं चाहते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा लिपिन, वो है कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या आपके भाई रशियन सिटीजनशिप को लेकर वो बातचीत कर रहे थे कि ये बेबुनियाद आरोप है? मतलब ये कहा जा रहा था कि क्या आपके भाई वहां सेटल करना चाह रहे थे कि सिर्फ नौकरी करने गए थे, सिटीजनशिप मांग रहे थे, कि इस पे कोई सच्चाई? उसके एक दोस्त ने उसको लेके गया, वो बोला पहले मेरे भाई को बोला पोलैंड में ये पोलैंड के लिए विषय बोला, बाद में वो आदमी बोला ये मेरा भाई उसको पैसा दे दिया, बाद में वो बोला पोलैंड नहीं है, पहले हम रशिया जाएगा, 1 साल उधर रुकेगा, बाद में उधर उसका उधर रशिया का सिटीजनशिप मिलके हमको पोलैंड जा सकते हैं। और रशिया का सिटीजनशिप मिलने के लिए जल्दी मिलने के लिए एक ही रास्ता है, वो उसका मिलिट्री में काम करने का। मगर हम मिलिट्री में हम काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो आदमी भी मिलिट्री में था, वो बोला हमको कैंटीन में जॉब मिलेगा, इलेक्ट्रिकल जॉब मिलेगा, क्लीनिंग जॉब मिलेगा, ऐसा काम में हमको मिलता है। कोई फिक्र मत करो, डरने का बात नहीं है, मैं भी उधर बहुत दिन से उधर है, तो तुम आओ, दोस्त लोग को भी लेके आओ, हमको अच्छा सैलरी मिलेगा, बस एक ही यार इधर रुको, बाद में हमको चला जा सकते हैं। ये बिलीव करके मेरे भाई उधर गया। जी,
लिबिन बहुत बाद बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये पूरे मामले को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। That was the brother of people, and this is exactly what they have been saying, that despite multiple attempts that they have made, in fact, this is what the mother said. We reached out to her earlier in the day, hoping that we will get to know the full story of what really transpired. The lady was grieving the tragic death of her son, hoping that the promises that were actually made to her, they would be fulfilled. Now, as we come to the end of this news wheel, let's record and summarize with the Note Assist using Galaxy AI on Samsung Galaxy Z Fold 6. Hamas has accepted a draft agreement for a ceasefire in the Gaza Strip and the release of dozens of hostages. Mediator Qatar said the negotiations were at the closest point yet to sealing a deal. The United States, Egypt and Qatar have spent the past year trying to mediate an end to the 15-month war and secure the release dozens of hostages captured in Hamas on 7th of October. There you have it, the precise reading of the news in a simpler format using Galaxy AI on Samsung Galaxy Z Fold 6. We'll be back with the headlines in a few minutes.